Wow. Hi, everyone. Good morning. I did not expect so many of you. Good morning, Prabal. Navasha, hi, good morning. I, I'm totally flabbergasted. I was expecting, uh, I'm so sorry that this took some while, first day after a long time. So that's why, but it won't happen again. Um, Sneha, good afternoon. Mehak, good afternoon. What the hell am I holding? Um, Good afternoon, Ishita. Miss, I can't hear your audio. Uh, can you not hear me, guys? क्या आप मुझे सुन सकते हैं? Namaste, Somesh. Hello, Aditya, Navasha, ma'am. My comment. What is it? What is it? Uh, when I'm trying to find my batch, it is not there. Other than that, I'm not able to find any other subjects. Let's talk about it, Navasha. Just okay. Good afternoon. I have rolled in a batch AS Legals that started on 2nd October, but ma'am, now unable to. Mhm. All right, we will talk about this, Navasha. I have a proper explanation for this, okay? But before that, let's get started with the session, okay? Hello and good afternoon, everyone. Welcome to the Hindu editorial analysis brought to you by An Academy, and I am Vaishnavi, who does the analysis. I will talk about it, Navasha. Don't worry about it, okay? Good evening. Good evening. Good evening. Okay. Kathak. Good afternoon. Mehek. Good afternoon. Savi. Hello. 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 All right. So let's get to इस session में हम क्या करने वाले हैं? First, let me discuss that. Okay. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट यू विल गेट द वर्ड्स ठीक है जो एक एनालिसिस जो एक हिंदू एडिटोरियल लिया है हमने उसका आपको उसके आपको वोकेबुलरी दिखेंगे नाउ इफ पॉसिबल make as many sentences as possible. I will just check if one or two sentences या उससे ज़्यादा sentences if there is any grammatical error that you need to correct, I will correct that. Apart from that, please remember these words because these are high frequency words, and then we are going to move on to the Hindu editorial, okay, जो हमने select किया है आज Hindu editorial, okay. Mm-hmm. All right, so let's get started. Before we get started, this is my Telegram channel. अगर अभी तक आपने नहीं सब्सक्राइब किया है मेरे चैनल का, ये तो मैं हूँ, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, प्लीज मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू माय चैनल बिकॉज ऑल द इम्पोर्टेंट इवेंट्स दैट आर हैपनिंग और कौन से प्लेटफॉर्म पे हो रही है, ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको मेरे चैनल के थ्रू मिलता है, ओके. इट इज कॉल्ड unacademy_vaishnavi_clat. अगर वैसे नहीं मिल रहा है, यू कैन स्कैन दिस QR कोड and you'll be able to find it. अगर वैसे भी नहीं मिल रहा है आपको मेरा चैनल, तो आप वैष्णवी पांडे 31 टाइप कीजिएगा रनिंग में, you will be able to find my channel, okay. एंड माई कोड इज वैष्णवी 10. सो जहां भी आपको लगे कि कोई एजुकेटर का कोड इस्तेमाल करना चाहिए जब आप बैचेस में इनरोल कर रहे हो, आप मेरा कोड इस्तेमाल करोगे, समझे? ऑल राइट, ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. हाय, मेरे दिल का तुमसे है कहना. लेजेंड सावी. हेलो. Oh, thank you. Thank you. What is happening? Oh my God. All right. So सबसे पहला वर्ड से शुरू करते हैं. जो हमारा पहला वर्ड है, let this session begin, and we start with the word compulsion. Okay. तो ये सारे वर्ड्स हैं जो इस आज ज्यादा वर्ड्स नहीं है, आज बस 15 वर्ड्स हैं, ओके. सो ये सारे वर्ड्स आपको इस एडिटोरियल में दिखेगा. सबसे पहला वर्ड है कंपल्शन, ओके. कंपल्शन का मतलब क्या होता है? इट इज अ नाउन फॉर्म, ओके. SION आ जा रहा है, इट इज अ नाउन फॉर्म, ओके.
I remember you, but I don't. Did you tell me your name? I remember you have come for my sessions, Legend Savvy. But ma'am, do we have to write the notes for the same? It is up to you, Navasha. अगर आपको कोई वर्ड लगता है जो आपको लगता है कि आपने पहले नहीं सुना है या आपको उस वर्ड से यू थिंक मीनिंग लिखना जॉट डाउन करना जरूरी है, यू कैन जॉट इट डाउन, ठीक है? नहीं तो अगर आप सेंटेंसेस बनाएंगे तो आपको हर दिन कुछ ना कुछ वर्ड्स रिपीट होते जाएंगे, तो आप सुनते रहोगे तो भी काम चल जाएगा, ओके? कंपल्शन इज अ नाउन फॉर्म जिसका मतलब होता है द एक्शन और स्टेट ऑफ फोर्सिंग और बीइंग फोर्स्ड टू डू समथिंग, ओके? कंस्ट्रेंट, अगर अगर किसी को मजबूर किया जा रहा है कोई चीज करने को के लिए, ओके? मजबूर किया जा रहा है या फोर्स किया जा रहा है कोई चीज करने के लिए, ओके? सो उस स्टेट को कहते हैं कंपल्शन, ओके? सो आई हैव द कंपल्शन ऑफ taking the classes on time, but somehow I still am late. Navash ki educator. Okay. Wow, Ravneet, you have sorted it out for me. Thank you. Prabal, got it. Okay. Uh, द एक्शन और स्टेट ऑफ फोर्सिंग और बीइंग फोर्स टू डू समथिंग, ठीक है? अगर आपको मजबूर किया जा रहा है कोई चीज करने के लिए तो दैट इज अ कंपल्शन, ओके? मतलब आप चाहो या ना चाहो आपको ये काम करना ही है, आपको ये कार्य करना ही है, दैट इज कॉल्ड अ कंपल्शन, ओके? सो दिस इज द नाउन फॉर्म, ओके? एंड इसी से आता है कंपल्सरी, ओके? कंपल्सरी इसी से आता है, ओके? दीज क्लासेस आर कंपल्सरी, ओके? दैट मीन्स आपको करना ही करना है, आपको अच्छा लगे या नहीं अच्छा लगे, आपको करना ही करना है, ओके? नेक्स्ट वर्ड इज बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी बेने से आता है, रूट वर्ड यहाँ पर क्या है? बेने, जिसका मतलब होता है गुड, ओके? सो बेसिकली बेनिफिट, बेनिफिशियरी, बेनिवोलेंट, ऑल दीज वर्ड्स हैव बेने, जिसका मतलब होता है गुड, ओके? सो बेनिफिशियरी इज अ पर्सन who derives advantage, मतलब उनको फायदा होता है। बेनिफिशियरी एक ऐसे इंसान को कहते हैं, एक पर्सन को कहते हैं जिनको फायदा होता है फ्रॉम समथिंग, कोई चीज से, ओके? स्पेशली अ ट्रस्ट, विल और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, ओके? तो कोई चीज से फायदा जिनको होता है, ओके, उस इंसान को बेनिफिशियरी कहते हैं, ओके? और ये फायदा कहाँ से होता है? जनरली, पर्टिकुलरली ये कहाँ से मिलता है ये फायदे? ये या तो ट्रस्ट से मिलते हैं फायदे, या तो विल से मिलते हैं फायदे, या तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से मिलते हैं ये फायदे, ओके? सो दैट इज अ बेनिफिशियरी, ओके? द पर्सन इज कॉल्ड अ बेनिफिशियरी, ओके? All right, moving on to so start making sentences as you see the word, and as you can make sentences, please start making sentences now. I still don't see people making sentences. And thank you for all the heart. Okay, or the likes, whatever you're calling it. Mandatory is the next word. Mandatory is also like compulsion, okay? ये दोनों बहुत similar words है, okay? ये बस adjective form है, okay? Mandatory is something that is required by a law or mandate, okay? जो compulsory होता है, देखो यहाँ पर compulsory आ गया, okay? Mandatory is compulsory, okay? So compulsory is basically the adjective form of compulsion, है ना? तो ये इसका adjective form हो गया, right? And mandatory is also the adjective form, okay? So something required by the law, अगर law ने कहा है कि कानून कहता है कि ये आपको करना चाहिए, so this is a mandate, okay? It is a mandate or it is a mandatory thing that you are supposed to be doing, okay? कंटेंड करना किसी चीज को, ओके? कंटेंड करना, ओके? देखो दो वर्ड है यहाँ पर, बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को, कंटेंड और कंसेंट, ओके? कंटेंड और कंसेंट, ओके? दोनों दो सेपरेट वर्ड्स हैं, ओके? कंटेंट का मतलब क्या होता है? डिफरेंस कोई नहीं है, सिनोनिम्स है, ओके? दे आर synonymous to each other. मैंडेटरी जब हम यूज करते हैं, ओके, सो जनरली समथिंग दैट इज, हम मैंडेटरी इसलिए यूज करते हैं जब हम या तो कोई चीज कानून कहता है उसके लिए हम मैंडेटरी कहते हैं, या तो हम जनरली कहते हैं मैंडेटरी इन द सेंस ऑफ
rule made by an organization या कुछ ऐसा, तब हम mandatory कहते हैं. Compulsion you can use it anywhere and everywhere, anything that you're being forced into. Okay, so mandatory थोड़ा सा specific हो जाता है. Okay, rule और guidelines को लेके, और compulsion उतना specific नहीं है. They are synonymous to each other. You can use them. हम classes के लिए भी बोलते हैं ना कि these classes are compulsory या these classes are mandatory. Okay, so you can use either or. Okay, it is mandatory for students to come to school in proper school uniform. Very nice, Madhavi. It is mandatory to wear masks in classroom. Very nice, Sneha. Good job. Order, authority, state that. Hello, Naveen. हाँ, degree में difference है. Yes. It is mandatory for us to study to pass in our exams. Very nice, Navasha. Good job. This is the basic rule जो बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं. Still they are searching for shortcuts. So if you understand this, it will make your life very very easy. कि आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, एग्जाम में पास करने के लिए. Okay. All right, then we have robust. Okay, robust is a word जो आप बहुत बार देखोगे. इसको एक बार ध्यान से देख लेना, because this is a word that you will see very very often. पहले content कर लेती हूँ. Assert something as a position in an argument. Okay, so he contended. Okay, he contends. Okay, verb form है तो इसको ing में भी convert कर सकते हैं. इसको s या es में भी convert कर सकते हो. Okay, और पास्ट फॉर्म में ईडी भी यूज कर सकते हो. ओके, सो कंटेंडेड का मतलब होता है कोई आर्ग्यूमेंट चल रही है, उसमें आप अपना पोजीशन बता रहे हो. ओके, अपना पोजीशन असर्ट करते हो. अकॉर्डिंग टू मी, ओके, this is completely wrong and should not be done. Okay, so this is your content. Okay, you have contended that the argument presented by the other person is false and should not be followed. Okay, so basically, Apurva, namaste. I was contending that Russia must stop its counter offensive. Very nice, Aditya. Yes, it has to sound like an assertive sentence. That is important. And good job. He contends that the evidence are false. Yes, he contends that the evidences are false. Very nice, Mahika. Mahika, good job. New guidelines are implemented. Sneha, would you mind अगर आप इसको अपने caps lock को off कर दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा. Okay, because it looks like you are shouting at me. Like, new guidelines are implemented, which has robust rules and regulations. No, right? So caps lock अगर आप off कर दोगे आप तो बहुत अच्छा रहेगा. All right, so but good sentence. Sneha, good sentence. Okay, robust से भी आपने बना दिया. Very nice, good job. So strong and healthy, basically strong, vigorous. Okay, these are the synonyms. Okay, strong and vigorous are the synonyms. Antonym हो गया weak and frail. All right, weak and frail are the antonyms. Okay, I have a robust feeling about my parents' compulsion about not going to school today. सोमेश, कुछ गड़बड़ हो गई है. कुछ गड़बड़ हो गई है. पेरेंट्स का कंपल्शन. Okay, I have a robust feeling. Okay, now it is not उस सेंस में हम स्ट्रॉन्ग नहीं यूज करते. रोबस्ट पॉलिसीज के लिए यूज कर सकते हैं, रोबस्ट आर्ग्यूमेंट के लिए यूज कर सकते हैं, बट स्ट्रॉन्ग फीलिंग के लिए भी जनरली अवॉइड robust. Okay, so I have a strong feeling, you can say I have a strong feeling that my parents won't consent or contend. Okay, parents compulsory contends for me to go to school. Okay, something like that. Okay, कहीं तो गड़बड़ हो गई. She has contended that her husband has filed a false case against her. Very nice, Ishita. Very nice, good job. Prabal S. Jayashankar, what a man, right? Contended India's stance in the world by showcasing the hypocrisy of the West. Very nice, Prabal. Good job. Mandating services, service charges puts the consumer. Mandating service charge होना चाहिए वहां पर, puts the consumer in an
erroneous position. पोजीशन का स्पेलिंग थोड़ा गलत है, and I'm struggling to see as well these days. And making the provider a beneficiary. This compulsion is devoid of any specific law creates any specific that the law creates a discrepancy in the implementation. My God. Ravneet, good job. Good job. The rules written by the school administrations were initially robust but have turned weak due to current changes. Very nice, good job. Okay, so हमने देखा robust देखा, devoid देखा. Okay, devoid is an adjective. ठीक है, devoid is an adjective, entirely lacking or free from. Okay, devoid का हम कब यूज करते हैं? devoid के साथ क्या यूज करते हैं? devoid of. Okay, डिवॉइड ऑफ सर्टेन थिंग्स मतलब उस चीज में इस चीज की भारी कमी है. ओके, मतलब डिवॉइड ऑफ समथिंग मतलब इट लैक्स समथिंग. ओके, इंटायरली. ओके, इंटायरली मतलब डिवॉइड ऑफ मतलब पूरा उसमें कुछ है ही नहीं वो चीज. ओके, जैसे दिस डिश इज डिवॉइड ऑफ मसाला. ओके, दैट मीन्स इसमें बिल्कुल भी मसाला नहीं है इस डिश में. राइट, देन वी हैव रिकोर्स. ओके, रिकोर्स इज अ न्यू वर्ड. ये हमने पहले कभी नहीं किया है. ओके, न्यू वर्ड. A source of help in a difficult situation. A source of help in difficult situation. जब भी हम recourse की बात करते हैं, it is basically a source of help. आपको जो help मिलता है एक difficult situation में, that is to recourse. Okay, that is the recourse. Okay, ये noun form है the recourse. Okay, so that becomes the recourse. Okay, so a source of help in a difficult situation is a recourse. Okay, so he provided me with the recourse that I really needed. Okay, or that I desperately needed. Okay, he provided me the recourse I desperately needed. Okay, डिस्क्रिपेंसी इज अ वर्ड जो आप बहुत बार देखोगे, बहुत जगह देखोगे. डिस्क्रिपेंसी इज अ नाउन जिसका मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स दैट शुड बी द सेम. ओके, डिस्क्रिपेंसी का मतलब क्या होता है? दो चीजों में ऊपर नीचे जो सेम होने चाहिए थे. ओके, आई वॉज wanted by why Aditya wanted by my boss for a robust dialogue with the CEO of the company. But why have you put आदित्य स्पेलिंग क्या हो गया है वांटेड का? इतना भयंकर स्पेलिंग आपने क्यों लिखा है? आई एम स्टिल थिंकिंग इज देयर अ वर्ड लाइक दैट? टाइप नहीं करने देता इसीलिए सारे वर्ड्स एक सेंटेंस में. वेरी नाइस. The rule written by the school administrator were initially robust. ये तो मैंने पढ़ लिया था. Okay, अन अकेडमी भी तो गायब कर देता है सेंटेंसेस. नहीं, नहीं करता है. ओके, ऑल राइट. इनॉर्मस सॉरी इरोनियस इरोनियसली. ओके, एरर से आता है इरोनस. ओके, इरोनियसली एल वाई जब भी आ जाता है किसी भी वर्ड में तो इट इज जनरली एन एडवर्ब. ओके, एडवर्ब हो जाता है. ओके, इरोनियस जैसा आई थिंक प्रबल ने बनाया है सेंटेंस इरोनियस से, उसमें एल वाई ऐड कर देंगे तो इरोनियसली हो जाएगा. इरोनियस इज द एडजेक्टिव फॉर्म, इरोनियसली इज द एडवर्ब फॉर्म. In a way that is wrong or false. Okay, in a way that is wrong or false is the meaning of erroneous. Okay, in your erroneously. Okay, so something that is wrong or simply false. Okay, कंसेंट का मतलब क्या होता है? कंसेंट फॉर्म होते हैं, राइट? परमिशन और अग्रीमेंट. अगर आप कंसेंट फॉर्म साइन करते हो मतलब आप परमिशन दे रहे हो उस एक्सपेरिमेंट को होने का या जो भी चीज के लिए कंसेंट दे रहे हो, या आप अग्रीमेंट में हो कि ये हो रहा है और मैं इसके बारे में अवेयर हूं. ओके, बेयर आउट का पास्ट फॉर्म होता है बोर आउट. ओके, बोन आउट. ओके, सो
bear out, bore out. Okay, this is a phrasal verb जो जिसका मतलब होता है to support the truth of something. Okay, bear out का मतलब होता है किसी चीज का सच्चाई को support करना, किसी चीज के सच्चाई को support करना. Okay, phrasal verb है, remember that. It is bear out का मतलब क्या होता है? bear और out अगर साथ में लगा हुआ है तो it is a phrasal verb which means to support the truth of something. किसी किसी चीज के सच्चाई को support देना. Okay. He erroneously used English to prove his point. Very nice, Ishita. Good job. Bravo. I was devoid of any ideas to complete my project, but she helped me with a recourse. Very nice. Very nice, Sneha. Good job. Simple and nice. Whenever I listen Anirudh Ravichander Ravichander's song, who is I have no idea. Song, I devoid myself of negative thoughts. Okay, I devoid myself of negative thoughts. Somesh, good job. This time you did it. Nice sentence. Okay. Navasha, when Macbeth assassinated King Duncan, he was devoid of his emotional feelings. Very nice, marvelous, spectacular, Navasha. Good job. बढ़िया बढ़िया. उड़ान मैम क्लास 2024 में. Okay, congratulations, good job. What do I do with that? ऐसे ऐसे इंफॉर्मेशन लेके आते हो आप लोग रैंडमली कुछ. मैं क्या करूँ उसका? Congratulations. Revisit, okay, is the verb form. Okay, revisit is the verb form. Um, revisit का मतलब क्या होता है? To talk or think about something again. Okay, so we are going to revisit this topic once again. If I say something like that, अगर मैं बोलती हूँ कि we are going to revisit this topic again, मतलब हम इस टॉपिक के बारे में फिर से डिस्कशन करेंगे. Okay, हम उस पे वापस जाएंगे. Okay, and we will talk about it. To talk or think about something again with the intention of improving it or changing it. Okay, intention क्या होता है? उसको या तो improve करना या तो उसको change करना. Okay. Then we have exemption. Okay, Somesh, I will then. Thank you. India should revisit its stance on Israel-Palestine conflict. Okay, very nice. Prabal, good job. Can you please show the last slide? Yes, Neha, I'm going back to it. I'm going back to it, and you will have to make sentences again. Okay. Uh, But let me just finish revisit once. Revisit is the verb form. ठीक है, verb form है, मतलब इसको आप revisited भी कर सकते हो, revisiting भी कर सकते हो, revisits भी कर सकते हो, right? So to talk or think about something again with the intention of improving it or changing it. Okay, that is revisit. Okay. Athletes are given an exemption from the Korean military service for adding to national prestige. Very nice, Ishita. Good job. Is there a full video on Hindu analysis? Like, no, this is just editorial analysis. मैं अगर वैष्णवी मैम क्लास ले रही है तो बस एडिटोरियल का एनालिसिस लेगी, बिकॉज मैं जीके नहीं करती हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ. ओके, सो माय इंटायर एम एंड फोकस इज completely different. It's towards the English and learning new words and understanding and comprehending an editorial page or yeah, an editorial. All right, full of energy. Don't rely on lyrics, please. Only music. Okay, please. All right. Okay, उड़ान. हाय गुरनूर, बहुत लेट हो गए लेकिन अच्छा हुआ आ गया. Good job. I was just wondering where you have been. Okay. Sneha, are you done?
Can we move on to the next page? एक sentence बना दीजिए गुरनूर, now that you're here. All right, moving on to the next page. If you want to improve any relationship, then you should revisit it, and it is better to try to improve it rather than arguing about it. अपने को क्या करना है इस बारे में पता नहीं लेकिन good job Apurva, good job. If you want to work on relationship, it's better to work on it rather than and communicate rather than argue about it. Well said. Easier said than done. That's what I have to say on this. Okay. ठीक है. Exemption is the next word. Exemption is the noun. Okay. Special permission not to do or pay something. Okay. Exemption is आपको उस चीज से छूट मिल गई है. Okay. आपको किसी चीज से छूट मिल गई है. Yes, absolutely, Somesh. It's easier to fight and just yell at the other person rather than sit and talk. It is. Yeah. Still trying, not perfect, but still try. I devoured some choco chips which were devoid of sugar. Very nice, Aditya. Very nice. Good job. Ascertain is the last word. Okay. Ascertain karna matlab to discover something. Okay. Ascertain is, again, it is a verb form which means to वर्क फॉर्म है. ओके. तो आप इसको चेंज कर सकते हो into ascertained. Okay. Or ascertaining. Okay. Or ascertains. To discover something is to ascertain. Okay. The judge requested the partners to revisit their marriage relationship before carrying out their divorce procedure further. Very nice. Good job, Navasha. Good job. I devoured some chocolate chips. ये मैंने पढ़ लिया है. The IIT student got exempted from some topics. Very nice. Good job. Due to his medical condition, he was exempted from doing physical work. Very nice, Mahika. Good job. Sneha, I revisited my previous mistakes to ascertain my position for clearing CLAT. Very nice. I should always be capitalized, Sneha. ये पहला वाला letter intentionally capitalize किया करो, okay? Same goes to you, Ishita. I could not ascertain the actual reason behind the hit and run case, which left me perplexed. Very nice, and put a full stop to finish it. Started with a capital I and finish it with a full stop. Perfect. Then it is absolutely perfect. Very nice, Ishita. Aditya bhai, I eat only that samosa which were devoid of aloo but in childhood. समोसा विदाउट आलू. जब तक रहेगा समोसे में आलू. समेश आप पूरा सॉन्ग को गलत करार दे दे रहे हो. When pigs fly, it is like that. Okay, so it is samosa में आलू रहना is like obvious. Accountants prepare a balance sheet to ascertain the financial position of the business. Madhvi, wow, Madhvi, good job. Dr. Charles Xavier, a certain team, X-Men. Very nice, very nice. लेकिन A capital नहीं होगा यहाँ पर गुरनूर, but the sentence makes complete sense. Good job. Charles Xavier, ascertained the team X-Men. Very nice. Ma'am, he is mocking me, I think. Somesh bhai. Okay, because you said choco chips which had no sugar, so he's saying like samosas without aloo. Okay, I get it now. I will have to ascertain my mistakes. Very nice. Yes, legend savvy. Good job, good job, good job. So congratulations to our CLAT topper with All India rank 8, Yashashvi Dhakar. Uh, these are our other students who have achieved this and are in
the top NLUs. All right. अनअकैडमी का लॉ एडमिशन टेस्ट हो रहा है क्लैट 2025 का January 7th को 4 p.m. Make sure that you, because this test is very very simple. आपको यहाँ पर स्कॉलरशिप मिल सकती है 90% की, and the top 10 rankers को 2500 का gift voucher भी मिलेगा. Maestro batch is a batch which is for MHCT and CUET. Okay, dates announce हो गए हैं CUT के, so please make sure that you become serious now for this exam as well. Okay, और ये जो classes हैं, this will also benefit you for CUET because vocabulary आता है, synonyms आता है, antonyms आता है, and most of the words are high frequency words जो हम discuss करेंगे in classes में, right? So it is exclusively available at a discounted price of 11,999. I am taking English language in this batch along with other top educators, so you can use my code Vaishnavi10. Do not forget to use my code Vaishnavi10. Target NLUs is dropper batch for CLAT 2025 aspirants. You can use my code Vaishnavi10 to enroll in this batch as well. CLAT Iconic के फायदे क्या है? Everything that you get in Plus, you get it over here. Raise a hand feature मिलता है, live mentoring sessions मिलते हैं, detailed physical notes मिलते हैं that will be delivered at your doorstep. Printed full length mock test जो आपके doorstep पे आपको deliver होंगे, and you will be able to attend offline mock test at our Unacademy center. ये सारे benefits हैं Iconic program में enroll करने के, okay? All right, so let's start with the editorial. Pens and highlighters out, everyone. Please make sure that you are reading along with me, okay? ताकि आप देख सको कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, okay? All right, so the headline is faulty compulsion. Are we ready for the editorial? मुझे थोड़ा थोड़ा लग रहा है that my friend has lost his mind. Now I am asserting his brain. Ascertaining his brain, okay? Ascertaining his brain. Why does he give up his mind, probably, okay? Ascertaining his mind. Why does he give up only reaction to the reels sent by me? Why does he give reactions to the reels, only to the reels that are sent by me, and does not ever reply? क्षण से जो टूटे कोई सपना. Apurva, okay. Okay, all right. So, are we ready, everyone? Please take out your pens and highlighters. हम पूरे editorial को discuss करेंगे, and last में एक question भी होगा आपसे, which will be about the tone of the editorial. Okay. Ready. All right. Revisiting a place close to you takes you close to you, takes you down the memory lane. The feeling exempts us from routine stress, but the attempt to ascertain the past and constant digging of facts and cause can create a robust feeling, a robust action, a robust let's go, a robust something. Very nice, Ramneet. Good job. Very nice. This one was amazing. Okay. So faulty compulsion. Let's get started with faulty compulsion. Faulty compulsion. Issues with Aadhaar seeding are a headache for MGNREGS beneficiaries. Okay, MG NREGS, let's call it. Okay, for this session. All right. तो ये हो गया हमारा conclusion क्या है? Conclusion क्या हो गया? This is something that is only generally given in editorial section की conclusion पहले ही दिया हुआ रहता है कि क्या पढ़ने वाले हो आप उसका headline के बाद. Okay, so the issue with Aadhaar seeding are issues. एक issue नहीं है, issues है. Okay, Aadhaar seeding के साथ are headache. Okay, these are headaches for MG नरेग्स बेनिफिट्स बेनिफिशियरीज. ओके, जो उनके बेनिफिशियरीज हैं उनके लिए एक हेडेक है. ओके, आधार सीडिंग. ओके,
So this is the conclusion of this editorial. So let's look at the editorial. सबसे पहले अब हम मेन आइडिया देखते हैं. विद गवर्नमेंट रिफ्यूजिंग टू एक्सटेंड द डेडलाइन. ओके, गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, डेडलाइन को एक्सटेंड करने का. ओके, डेडलाइन को एक्सटेंड करने का मतलब लास्ट डेट ऑफ समथिंग अभी बताएगा. ओके, एक्सटेंड करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए मना कर दिया है. ओके, for Aadhaar details of workers under the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme. Okay, तो इसमें वर्कर्स को आधार की डिटेल्स ओके सबमिट करने के लिए ओके इस स्कीम के अंदर तहत उनका डिटेल सबमिट करने का, डिटेल्स चेंज करने का, एडिट करने का, सबमिट करने का डेडलाइन को एक्सटेंड नहीं किया है. ओके, दैट टू बी सीडेड टू देयर जॉब कार्ड बियॉन्ड 31st December 2023 to enable payment through an Aadhaar based payment system, ABPS. The system has now become mandatory. Okay, so this is the whole issue. Okay, एक तो उन्होंने 31st December तक ही डेट दिया था कि आपको जो भी चेंजेस करने अपने आधार में, जो भी डिटेल्स चेंज करने अपने आधार कार्ड में, वो आप 31st December तक ही कर सकते हो. उसके बाद आपको लिंक करना है अपना आधार कार्ड. ओके, आधार कार्ड में सीडिंग ऑप्शन लिंक करना है, वेर आधार कार्ड के बेसिस पे आपका पेमेंट होगा. ओके, एंड दिस हैज बिकम मैंडेटरी. ओके, पूरे सिस्टम में मैंडेटरी हो गया है. एंड द सिस्टम इज कॉल्ड एबीपीएस, विच इज आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम. ऑल राइट, सो दिस बिकम्स द मेन आइडिया, इजंट इट? दिस बिकम्स द मेन आइडिया कि इस इशू के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं. ओके, दिस इज द प्रॉब्लम. मी आई एम द प्रॉब्लम. इट्स रवनीत खुश हो गए होगे. माफी गुरुजी. बेनिफिशरीज साउंड नॉइस. जो मेरी फोटो चेंज करनी है आधार कार्ड में. वेरी नाइस. ओके. No, not a Swiftie, but I like her songs and she is very pretty. Two qualities. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द रेस्ट ऑफ इट. ओके, तो अब हम देखते हैं कि इस इशू को अब इलेबोरेटली डिस्कस किया हुआ रहेगा. ओके, दिस बिकम्स द प्रीमाइस. ओके, यहां से प्रीमाइस शुरू है. अलार्मिंगली द डिसीजन वुड now affect nearly 35% of job card holders for this mode of payment and 12.7% of active workers, those who have worked at least one day in the last 3 financial years, thereby putting a dampener शायद मैंने नहीं डिस्कस किया था ना, on the demand driven scheme for many. Okay, so what is this saying? Okay, ओके, व्हाट इज दिस सेइंग? दिस इज बेसिकली सेइंग कि ये जो देखो अलार्मिंगली, ओके, चौंकने वाली बात तो ये है दोस्तों, चौंकने वाली बात तो ये है दोस्तों कि 35% लोगों को ये अफेक्ट करेगा. ओके, ये कार्ड होल्डर्स को अफेक्ट करेगा, जिसमें से 12.7% वर्कर्स एंड 12.7, ओके, 35% लोगों को ये अफेक्ट करेगा. और 12.7% ऑफ एक्टिव वर्कर जिन्होंने एक दिन भी काम किया है, ओके, इस फाइनेंशियल स्कीम के अंदर, ओके, एक दिन भी काम किया, उनको अफेक्ट करेगा. ओके, और ये इसके वजह से ये इसको डैम्पिन कर रहा है. मतलब किसी चीज को डैम्पिन करना, डैम्पनर जैसा काम करना, मतलब बेसिकली किसी चीज को रिस्ट्रेन करना. ओके, किसी चीज में बाधा डालना, किसी चीज को में अड़चन पैदा करना. ओके, सो putting a dampener on the demand driven scheme for many. Okay, तो ये demand driven scheme है और इसके ऊपर थोड़ा सा बाधा डाल रहा है, ये रोक टोक डालेगा. ओके,
ABPS implementation, the union government claims, will ensure that payments are quick. Okay, ABPS ABPS इम्प्लीमेंटेशन क्या इंश्योर करेगा? यूनियन गवर्नमेंट क्या क्लेम कर रहा है? ये इनका क्लेम है, ओके, ये इनका क्लेम है, ये फैक्ट नहीं है, ये इनका क्लेम है कि ये इंश्योर करेगा कि पेमेंट जल्दी से जल्दी हो जाए, ओके। रिड्यूस रिजेक्शन एंड प्लग ऑल लीक्स, ओके, जितने भी लीक्स है, ओके, इसमें इस पूरे सिस्टम में उन सारे को एड्रेस कर देगा, सब कुछ सही हो जाएगा, ओके। बेसिकली देयर विल बी नो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज इस चीज के वजह से, ओके। आधार कार्ड लिंक करने की वजह से कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज नहीं होंगी, ओके। The government also contends, और गवर्नमेंट ने ये भी दावा किया है, that as the ABPS has been in place for MG regs from 2017, and because Aadhaar number availability is near universal in India, the ABPS is a robust and a safer way to transfer wages, okay। तो उन्होंने ये भी क्लेम किया है कि ये चूंकि MG NREGS ये जो स्कीम है, ये 2017 से चल रहा है, ओके। तो इसलिए ये ट्रस्ट वर्दी स्कीम है, ओके। और ये जो एबीपीएस है, ये भी रोबस्ट है, ये बहुत ही एनर्जेटिक और बहुत ही अच्छा ट्रांसफर करने का, अपने पैसे ट्रांसफर करने का एक बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि आधार कार्ड सबके पास है, ठीक है। आधार नंबर अवेलेबिलिटी ऑलमोस्ट सबके पास है, इसीलिए ये बहुत अच्छा और सेफर स्कीम है, ओके। हाउएवर, ओके, देयर इज अ कॉन्ट्रडिक्शन ओवर हियर, एंड द कॉन्ट्रडिक्शन सेज, however, the over-reliance on technical tools has resulted in problematic implementation with beneficiaries devoid of a proper, देखो devoid के साथ क्या लग रहा है, devoid of a proper recourse for corrections in the system, okay। तो basically ये system की वजह से, okay, हम कुछ ज्यादा ही रिलाई कर रहे हैं टेक्निकल टूल्स के ऊपर, इसके वजह से क्या हो गया है, बेनिफिशियरीज जो है वो क्या नहीं कर पा रहे हैं, डिवॉइड ऑफ अ प्रॉपर रिकोर्स फॉर करेक्शंस इन द सिस्टम। उनको करेक्शन करने का सिस्टम में जो उनके फॉल्टी डिटेल्स भरे हुए हैं या फॉल्टी नंबर भरे हुए हैं, उसको करेक्ट करने का उनको मौका नहीं मिल रहा है, ओके। क्योंकि ये इतना टेक्निकल चीज है, ओके, टेक्निकल टूल है, इसीलिए, ओके। डेटा एनालाइज्ड बाय लिपटेक इंडिया सजेस्ट दैट द नेम्स ऑफ 7.6 crore workers have been deleted over the past 21 months due to discrepancy between the Aadhaar and the job card, among other reasons, with many of these done erroneously. Okay, so basically, लिपटेक ने एक लिपटेक के हिसाब से, ओके, डेटा उन्होंने एनालाइज किया और बताया कि 7.6 करोड़ वर्कर्स क्या कर चुके हैं, अपना डिलीट कर चुके हैं आधार कार्ड, ओके, इन द पास्ट 21 मंथ्स, ओके। क्योंकि डिस्क्रिपेंसी ऊपर नीचे था, डिफरेंस था, जो आधार कार्ड और उनके जॉब कार्ड में जो नंबर्स या नेम या कोई भी डिटेल जो है वो गड़बड़ था, ओके, दोनों सेम नहीं थे, ओके। और बहुत सारे रीजन है कि उन्होंने क्यों डिलीट कर दिया है, ओके, बट दिस इज वन ऑफ दोज रीजन, ओके। देयर आर, ओके, देयर आर, बढ़ते हैं सेकेंड पैराग्राफ और द फाइनल पैराग्राफ की तरफ। देयर आर अदर इश्यूज विद द यूज ऑफ आधार पेमेंट, ठीक है, और भी इश्यूज हैं। अब देखो यहाँ पर डैश दिया हुआ है, ओके, दिस इज एम डैश विच इज द लॉन्गेस्ट डैश, ओके। तो एम डैश जो भी दिया हुआ रहता है, इट इज आइदर एक्सप्लेनिंग, फर्दर एक्सप्लेनिंग, ओके, समथिंग। तो और इश्यूज है, उसके बाद फिर लिखा हुआ है, वेर एरर्स इन एनी स्टेप ऑफ द प्रोसेस रिजल्ट्स इन पेमेंट फेलियर, ओके। कोई भी स्टेप में अगर एरर होगा, ओके, तो उसके वजह से और भी इश्यूज है आधार कार्ड के ऊपर, जिसकी वजह से अगर कोई भी एरर होता है आधार कार्ड में तो पेमेंट फेल हो जाएगा, ओके। अपार्ट फ्रॉम the spelling discrepancy issue between the Aadhaar and the job card of the worker, there is also the problem of mapping the Aadhaar to the wrong bank account for any, okay, for many। तो basically एक तो स्पेलिंग एरर है, ओके, बहुत सारे नाम में स्पेलिंग एरर है, या
सो मैच नहीं कर रहा है जॉब कार्ड और उनका आधार कार्ड। उसके अलावा और एक इशू है, दैट इज मैपिंग इशू। मैपिंग इशू रॉन्ग होने की वजह से बैंक किसी और बैंक अकाउंट में चला जाएगा उनका पैसा, तो फिर क्या फायदा होगा। ओके। In a number of cases, payments can be diverted to some other account than the one beneficiaries prefer, and also without their consent. Okay. Hmm. और बहुत सारे केसेस में क्या हो जा रहा है, पेमेंट्स कैन बी डाइवर्ट, पेमेंट को हम डाइवर्ट भी कर सकते हैं। ओके, बहुत सारे केसेस में पेमेंट डाइवर्ट भी कर सकते हैं कोई और अकाउंट में। ओके, जो बेनिफिशियरी प्रेफर कर रहे हैं वो अकाउंट में नहीं, कोई और अकाउंट में डाइवर्ट भी कर सकते हैं, एंड उनके कंसेंट के बिना कर सकते हैं। ये लो। Okay, claims by the, so this is a huge error, right? So claims by the government that the Aadhaar use has reduced delays in wage payment have also not been borne out. Okay, borne out, borne out, bear out हमने देखा है, borne out ये भी नहीं। और क्या क्लेम्स आ रहे हैं कि claims by the government that Aadhaar use has reduced delayed in pay, हाँ, उन गवर्नमेंट और भी क्लेम कर रही है कि आधार के यूज करने से उनके पेमेंट्स जो हैं वो लेट नहीं आएंगे। ओके, वेजेस जो हैं वो लेट नहीं आएंगे। ओके, ये वाला क्लेम भी अभी तक सही नहीं साबित हुआ है, अकॉर्डिंग टू लिपटेक इंडिया, विथ वेज डिलेज लार्जली ड्यू टू इनसफिशिएंट फंड इन द फर्स्ट प्लेस। ओके। तो ये वाला भी क्लेम सही नहीं है इनका, गवर्नमेंट का, कि पेमेंट फास्ट हो जाएगी, बिकॉज अगर इनसफिशिएंट फंड है तो फिर उसमें नहीं सेंड हो पा रहे हैं। ओके। So let's look at the conclusion. Without cleaning up Aadhaar seeding and mapping with bank accounts, making the ABPS mandatory will only create further issue. Okay, बिना साफ सफाई किए आधार सीडिंग की, ओके, आधार की, ओके, और उसकी मैपिंग किए हुए बिना करेक्ट बैंक अकाउंट से ये जो एबीपीएस को मैंडेटरी कर रहे हैं, ये और इशू पैदा करेगी। ओके, गवर्नमेंट के लिए लोगों के लिए और इशू पैदा करेगी। द यूनियन गवर्नमेंट मस्ट रिविजिट दिस डिसीजन। अब ऑथर क्या बोल रहा है कि यूनियन गवर्नमेंट को एक बार ये डिसीजन को वापस से सोचना चाहिए, इसके ऊपर वापस से डिस्कशन करना चाहिए, इसको रिविजिट करना चाहिए, and work out a way to correct the faulty seeding and mapping problem before imposing ABPS. Okay, तो ABPS impose करने से पहले ये मैपिंग और सीडिंग प्रॉब्लम जो है, फॉल्टी मैपिंग और फॉल्टी सीडिंग प्रॉब्लम जो है, फॉल्टी सीडिंग एंड मैपिंग प्रॉब्लम जो है, वो उनको एड्रेस कर ले, उसके बाद इसको कंपलसरी करे। ओके, मैंडेटरी करे। द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट हैज सेड दैट इट मे कंसिडर एन एग्जेम्पशन फ्रॉम एबीपीएस ऑन अ case to case basis for gram panchayats if there are technical issues, but it would be better if the ministry conducts social audits to ascertain the extent of the problem before insisting on ABPS. Okay, तो उन्होंने बोला है, ठीक है, गवर्नमेंट ने क्या बोला है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने कहा है कि ऐसे कुछ कुछ केस टू केस बेसिस पे हम एग्जेम्पशन करेंगे, एक्सेप्शंस बनाएंगे, कि आप, आपके ऊपर ये लागू नहीं होता है क्योंकि ये टेक्निकल इशू है या डिफिकल्टी है आपके अकाउंट के साथ। ओके, तो केस टू केस के बेसिस पे करेंगे। ऑथर क्या बोल रहा है, लेकिन बेटर क्या होगा कि वो ये देख ले कि एक ऑडिट कंडक्ट करें। ओके, ऑडिट कंडक्ट करें और देखें कि किसको इसको प्रॉब्लम आ रही है बिफोर इंसिस्टिंग ऑन एबीपीएस। ओके, एबीपीएस को लागू करने से पहले ये सब असर्टेन कर ले। ओके, ऑडिट कर ले कि किसको किसको प्रॉब्लम हो रही है और क्या क्या प्रॉब्लम है, उसको एड्रेस कर ले, उसके बाद ये इसको मैंडेटरी करें। एमजी NREGS remains a vital demand-driven welfare scheme that helps the rural poor, and its implementation must not be dependent upon a faulty technological system. Okay, so author finally क्या बोलता है, देखो यार, ये बहुत अच्छा स्कीम है, डिमांड ड्रिवन स्कीम है, ओके, वेलफेयर स्कीम है, तो ये अच्छा स्कीम है रूरल पुअर को हेल्प करने के लिए, जो नीडी है, जिनको चाहिए पैसे की जरूरत है, उनके लिए है। तो इतना अच्छा सिस्टम को ये completely relying on faulty technological system is not done. Okay, it is not something that should be done. Okay, so
गुड नून मैं ग्रुप पे बता दूंगी. ओके. आई थिंक 2 और क्लास है मेरी. या बिकॉज सही बोल रहा आदित्य, लिपटेक के सर्विस के बेसिस पे ही बोल रहे हैं, बट देर आर अदर प्रॉब्लम्स एज वेल. तो लिपटेक इज जस्ट फाइंडिंग आउट कि बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम है. ओके. एस लीगल के साथ है नहीं, प्रारंभ बैच के साथ है. प्रारंभ बैच के साथ है. ऑल राइट. ओके, सो व्हाट वुड यू से द टोन इज ऑफ टुडेज एडिटोरियल? टोन क्या होगा इस एडिटोरियल का? व्हाट डू यू थिंक द ऑथर इज, कैसा टोन है ऑथर का? Ma'am, before the class ends, please tell me how do I solve this problem? Okay. Yes, I will. I will. यस, और हम देखो लास्ट पैरा इज गिविंग एन एडवाइस. ओके, एडवाइस दे रहा है, राइट? और ऑथर का इंटेंशन कहाँ से पता चलता है? ओके, यस, रवनीत इज राइट ऑन द पार्ट दैट इट इज मोस्टली इंफॉर्मेटिव. ठीक है, इंफॉर्मेशन दे रहा है. ओके, बट द ऑथर इज टॉकिंग अबाउट एडवाइजरी है. ओके, व्हाई इज इट एडवाइजरी? बिकॉज द ऑथर इज सेइंग कि ये करने से पहले ये करना जरूरी है. दिस मस्ट बी डन बिफोर डूइंग दिस. ओके, सो इट इज एन एडवाइस दैट द ऑथर कैन नॉट बेसिकली पार्टिसिपेट इन. खुद ने कुछ कर सकते हैं लेकिन वो सुझाव दे सकते हैं. ओके, सो दैट्स व्हाई इट विल बी एडवाइजरी. Assertive to confident, yes, because the author is confidently saying that this must be done, this must not be done. So assertive, probably you can say the overall tone would be assertive. ठीक है. But conclusion में mostly the author is talking about कि क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए. Okay, so it is predominantly advisory and could be assertive as well. Okay, now coming to the question that I'm also facing the same situation as Navasha. Okay. So if you're facing the same situation, आपके अगर plus batches, okay, अगर आपने एस लीगल पहले वाला जो आपने बैच ज्वाइन किया था, okay, उस बैच में you are not, are you not able to access any other batch? Perturbed, concerned, तो ज्यादा नहीं कह सकते. अगेन एडवाइजरी वुड बी द मोस्ट एप्ट ओवर हियर आदित्य. ठीक है. Are you, Navasha, are you not able to have access to any other batch? आपको कोई और बैच में एक्सेस मिल रहा है? क्योंकि एस लीगल, Navasha, you enrolled in ACE Legal that started on 2nd October, okay? And now are you having access to other batch, any other batch? कि आपको कोई बैच में एक्सेस नहीं मिल रहा है? Because the thing is the batches are relaunched. Okay, तो batches जब relaunch होंगे तो आपको फिर से उस batch में access मिलने लगेगा. Okay, I'm able to see the schedule of other batches. Okay, तो try searching for आप एक बार you raise a ticket. Okay, raise a ticket and you explain the problem to the technical team. Okay, and I will also try to get this sorted out. Okay, देखो एस लीगल हैज बीन relaunching from
मार्च ऑनवर्ड्स, ओके, मार्च से हम उसको 2-3 बार रिलॉन्च किए, सो प्रोबेबली इट हैज बीन रिलॉन्च्ड इनटू अनदर बैच, ओके, सो इट विल बी कॉल्ड एस लीगल इटसेल्फ, लेकिन वो नाम दूसरा होगा, ओके. Yeah, the ACE legal that started from 16th November is the ACE legal that started from 12th November as October as well, okay? Is the same batch that gets relaunched. Okay, तो पहले वाले आपको classes नहीं दिख रहे होंगे and it is looking like a new batch, but it is the batch. It is the same batch. Okay? Sarthak, hello. All right. So that is it for today. Thank you everyone for attending the session. I am so glad that you stayed till the end. Proud of all of you for taking the first step towards your CLAT preparation and any other OLED preparations. Okay. So I will see you again 12 p.m. sharp tomorrow with the same pattern of discussion. Okay. सबसे पहले हम vocabulary करेंगे, फिर हम editorial करेंगे. All right. Bye bye. Adios. Namasha, is it? Oh, did you get it? So East Legal that started on 2nd October and East Legal that started on 16th November are the same. Yes, you got it, baby. You got it. आज इंग्लिश की बाकी क्लासेस नहीं होगी मैम. होगी, होगी प्रबल. You will have another session probably in the evening. Okay, मैं सारे updates दे दूंगी on my Telegram channel. Okay. You too. Have a nice day, everybody. Au revoir, Ravneet. Au revoir. Merci, merci. Uh, yes. Yes, Nawasha. Figures of speech का class सब होगा आदित्य, सब होगा. Don't worry. Everything will be done. All will be done in due time. Don't worry. Okay. ले लूंगी. बहुत सारे classes होंगे figures of speech के. All right. Bye bye, everyone. Take care. Adios. And bisous.